So now we are changing link to our next webinar, Medical Anthropology and Ayurveda. So first of all, we would like to listen what is anthropology from Dr. Suparna Sanyal Mukherjee, Dr. Sekat Kumar Basu, and our Dr. Nishant Shuklaji has really instantly prepared on medical anthropology also. I am grateful to all three speakers for this webinar, 1293rd webinar of AYUSH Samriddhi. Thank you. Thank you very much for your guidance, mentorship, cooperation, as well as active participation as expert as well as audience also. Thank you. Thank you all. I would like to invite Dr. Vishnu Prasad Sharma ji for his welcome blessings, and then Agnihotri sir for preamble, and then our webinar will be started. Professor Vishnu Prasad Sharma. Yes, thank you. Good evening to everybody. Namaskar. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this AYUSH Samriddhi International Conference Series. Today we have subject Medical Anthropology and Ayurveda. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Suparna Sanyal Mukherjee, Associate Professor and HOD, Department of Education, School of Humanities from Bolpur. Namaskar, Madam, and welcome you to this Medical Anthropology and Ayurveda webinar. Next, I want to welcome Dr. Sekat Kumar Basu, Executive Research Director, Performance Sheet, Lethbridge, Alberta from Canada. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Nishant Shukla, Professor, Department of Kaya Shri V.M. Mehta Ayurveda College, former Head Kaya Shri Gula Bakun Bharba Ayur College from Anandpur. Namaskar, sir, and welcome you to this Medical Anthropology and Ayurveda. Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this AYUSH Samriddhi webinar. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you, Professor Vishnu Sharma sir, for the warm welcome for our guest speaker. Well, as he has told, Professor Poisari told me that, we have received our guest speaker and we have welcomed them all. So now comes the matter of topic. It's really a great topic, especially the anthropology. Anthropology, and when it comes and falls under the heading of medical anthropology, it reveals a lot of hidden information and knowledge regarding the system which was Vivek or at the time of ancient time, when we were not so developed and having such type of devices and tools to know about the things belonging to the human being or even the cattle or in the environment with a special reference to their living, their taking diet and everything. When it comes in the under the heading of medical anthropology, it really makes us capable to know how the betterment of their life, how the concept coming from the historical background to the current era or present scenario be exploited with the knowledge available with us. So our guest speakers are full of knowledge. They are having their strong personality, having their informations updated on this topic. So definitely we are here to listen a lot from them. So without wasting any time, I would like to ask Professor Pawan Sharma ji to please invite our guest speakers for the topic, and we will all listen. We are eager enough to listen. Thank you. Thank you very much, sir.
So now I would like to request Dr. Suparna Sanyan Mukherjee ji. I welcome Dr. Suparna Sanyan Mukherjee for her elaborated speech, because we are really thumb impression regarding the subject and would like to listen from you. Thank you. Thank you, madam. Namaste. Thank you very much for giving me such an opportunity to say about the anthropology and Ayush. I really proud of that, and I really proud of this Ayush platform to giving me such an opportunity. Being a student of anthropology, being a scholar of anthropology, and at the same time being a researcher and teacher and the supervisor of this anthropology, I really thankful to all of you, all the dignitaries. First of all, so we should know the anthropology. What is anthropology? The Greek term anthropos and logos, that means to study. The study of human being. The anthropos, that means the human being. We are human being. We haven't come through the God graces. We have come through the evolution. The evolution is the main factor today we are living. So our scientific name, the Homo sapiens sapiens, it is a long journey. That long journey we have come across and where we are standing upon. So anthropology is a vast subject. It has a vast area of work. So anthropology has been divided in the four aspects, that is the archaeological anthropology, then the biological anthropology, then linguistic anthropology, and the sociocultural anthropology. So if there is no anthropos, there is nothing. There is society was not there. There is the development was not there. There is a civilization was not there. So all which has had been happened in this society, in this art, in this human culture that has done for the human beings only. Hence, the anthropology is the core subject, is the mother subject of all the subjects. It is amalgamated with the other subjects and which have a relationship with the all subjects of anthropology. So I feel myself proud to be an anthropologist, and it is in my blood, because anthropology is everyday life. Anthropology is every steps of life. Anthropology, we are living in an anthropogeneous world. We are living in the anthropocene, and we are exploring anthropology in every day-to-day life. Whatever we are doing, that is the anthropology is doing. So today's topic, I want to explore it. Anthropology and Ayush are the both sides of a same coin. So how this Ayush has come? What is the medical anthropology? The biological anthropology is a medical anthropology. The medical science is derived and taken birth from this anthropology only. So first, medical anthropology has been given birth of the medical sciences, which we are getting nowadays, and today's factor. So we are getting the all kinds of medicine, because it's the human invention. Without knowledge of this anthropology, we cannot develop anything. So when the human journey was started from the Africa, then Africa to the today's modern world, we have explored ourselves. We have been habituated. We have been getting touch into the all the factors. So the racial classification, like Caucasoid, Negroid, Mongoloid, with this racial classification, we are different. We are making the differentiations among the others. So in Indian medical anthropology, which examines how culture and society are organized around or influenced by issues of health, illness, and related matters, it views that the humans form medico aspects or medicinal categorization and the ecological perspectives, which has been derived, which has been related with each other. The relationship between anthropology, medicines, and medical practices is a rich history. Initially, general anthropology played a significant role in basic medical sciences, but in case of the clinical education become confined to hospitals, the value of practitioners' everyday experiences. Every time, every situation, every life expectancy, every life situation, we are examining the anthropology.
So anthropology has the wider role in the social culture, social aspect, socio-religious, socio-political, socio-economic aspect. Everywhere, every background of this human life is the anthropology related, because the anthropos, which we are standing upon our 2 feet, that is the we have become quadruped to biped. This biped locomotion has changed the total structure of the human being. So this total structure, when the structure has been changed, that means the total physiological aspect has been changed. The our skull is getting free. If we can, our kins like gorilla, gibbon, orangutan, chimpanzee, they have the this portion is joined. So our foramen magnum is placed medially, and this portion is getting absolutely free. That's why we can move our skull, we can move our head. That is the evolutionary trend. Everything is the evolution. We have that we are speaking, only the human being can speak. Other animals in the animal kingdom, they never ever speak. They can just make the sound, but they cannot speak, just because of the mastoid process, which is the lower jaw is placing very this prognatism, which is giving us the opportunity to speak. So hence the every field, every society, every aspects of our life, this is the dialect variation. It is also the anthropological point of view. The linguistic anthropology has covered this point, these aspects. So ethnography methods, like researchers who are doing the ethnographic to understand the how different cultural groups interpret and respond to the health related circumstances, because there are several indigenous technology. Each and every society, especially the tribal society, they have the separate indigenous technology to recover themselves, because there is no modern technology, there is no modern sustenance of livelihood status, but they are practicing anthropology, they are practicing the medicinal aspects, because those who are know the facts and figures, they are known as the medicine doctor in case of the indigenous technology. So social, religious, and economic factors believe that the practices about health, which across the cultures, and so influenced by the social, religious, political, historical, and economic factors too. So in that case, we can say that's the Ayush. Why this Ayush has come? So it has been pointed out that an electric non-system of knowledge and practices deriving from the continuous interplay of indigenous and introduced tradition. So notwithstanding, we can say that this continuous interplay, since independence, policymakers and other health system across the country have attempted to and largely succeeded in developing a decree architectural prevailing allopathic medicines over other systems. So most recently, however, the attempts have been made by combining the strengths of practitioners from traditional, contemporary, and alternative medicine, that is TCAM. This system of medicine under a coherent policy framework, popularly known as the Ayush. This Ayurveda, yoga, and the naturopathy. At the same time, Unani, Siddha, Shwarigpa, and the homeopathy, particularly in the movement towards universal health therapy in India. So, if we can look into the matter within this medical system during therapies, play an important role in curing the disease and manufacturing health. These drugs comprise of natural molecules which are better absorbed and utilized in the human body and produce effect without adverse drug addiction and the comparison to the synthetic medicines or synthetic molecule. So natural drug, especially the 21st century, if we can emphasize on this, the Ayurveda. So there are dreaded diseases. If we can take in, we can want to cure through this Ayurveda. There is the system. There is the opportunity to cure it from the grassroots level. That means from the core of the disease, we can cure it out. So prevention, because we can say that the first and foremost role of traditional medicine is in prevention of diseases, daily regimen which is a person should follow in order to maintain the health,
have been pointed out and have been explored in the secondary lifestyle with the allopathic medicines. So we can say that the anthropology and Ayush are combinedly get into the same point. If we can know the anthropology with the Ayush, we can develop our health system. So we can say that Ayush for untreatable diseases, Ayush for rejuvenation, Ayush for shock therapy, Ayush for rural healthcare system, Ayush for mental health care system, Ayush for safe sex, Ayush for every aspects of the life, because if we can introduce anthropology with the Ayush. So nowadays people are heavily rely on modern healthcare system, but in addition to the to this particular aspect, especially if a person uses Ayush therapy for maintenance of his or her life, then it will be the miraculous change it may happen. Because why? Because Ayush is treating in the holistic approach. At the same time, anthropology is involving this holistic. Anthropology can treat you as a holistic approach. At the same way, Ayush also can treat you as a holistic approach. So acute life-threatening, then the condition should be dealt with the modern healthcare. At the same time, more chronic condition where the long-term treatment is necessary, as in rheumatology, like the lifestyle disorder, should get the help from the Ayurvedic Ayush therapy. For rejuvenation of the mental health, then sexual disorder, dermatology, then the cosmetology, Ayush play an important part, which in interrupting or which can reduce the cost of healthcare. At the same time, government, especially in rural areas, should promote the Ayush therapy, will go a long way in prevention strategy of life. This is the Ayush and anthropology is the same, are the both parts of a same coin. So if we can explore Ayush with the anthropology, I hope there is a better future, better lifestyle for the people at large. Thank you very much. Thanks to the all. Thank you. Thank you very much, madam. You have really connected Ayurveda and anthropology well. Excellent. Well, Agnihotri, sir. It's a very new subject and new concept given by Madam Suparna ji. When she talked about the Ayush and anthropology, both proceed with the holistic approach. This is the underlining sentence which makes the say understanding better. That when we proceed with Ayush concept, the anthropological concept will run side by side. So in this way, here stands our Ayurveda, and Ayurveda having the holistic approach. So even not only even when we talk about the theoretical portion, like the Rogi Pariksha, Nali Mutta Malam Jiva Shabd Sparsh Dega Krati. So we see all these things, except apart from that, the patient is making any complaint of a particular reason or a particular point. We go for all the assessment concepts. So this is what the holistic approach is, and Madam rightly pointed out that anthropology is of the same opinion. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. Sir, ji. Thank you very much, sir. Thank you very much to giving me such an opportunity to say Thank you. something. Thank you. So, Thank you. to connect again, I would like to request Dr. Nishant Suklaji in continuation with anthropology and Ayurveda. Welcome, Dr. Nishant. And thank you for accepting proposal instantly. Excellent. Thank you. Please unmute. Agnihotri, sir. Professor निशांत शुक्ला जी प्लीज अनम्यूट द या आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। अब भी नहीं आ रही आवाज, आप शायद सेटिंग कर रहे हैं अपना। मुझे बुला रहे हैं सर? हाँ आ गई जी ठीक है। हाँ आप ही को बोल रहे थे। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज। अच्छा ओके प्लीज, एक ही सेकंड सर, मैं ये कर लेता हूँ। हाँ थोड़ा जो है ये कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू है आज, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे ही आप कॉल कर रहे हैं। नहीं, कई बार हमारा भी आउट हो रहा है। मैंने मोबाइल डाटा और इंटरनेट दोनों ऑन कर रखे हैं,
फिर भी स्पीड का चक्कर पड़ रहा है कुछ। अभी मैम बोल रही थी 2-3 बार ऐसे ही डिस्कशन हुआ था। या मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, यस, आपका स्लाइड आ गया है आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार। ये एक मैडम ने तो इस पर जो है ये काफी सारी जो है ये चर्चा सुवर्णा मैडम ने इस पर कर दी है, और 1969 के बाद इस पर जो है ये काफी सारा जो है ये विचार हुआ है आयुर्वेद में, या फिर ऐसा कहें कि भारतीय परंपरा में। तो इस चीज का जो है वो हमेशा विचार किया गया था, और ये दृष्टिगोचर होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तो ये जो है ये काफी हद तक जो है ये क्लियर था कि हम एक जो है ये सर्वांगीण विकास या फिर सर्वांगीण इफेक्ट्स को जो है हम एक्सप्लोर करते आए थे। पर आज जिस प्रकार से विश्व जा रहा है और जो नए नए विषय जो है ये आ रहे हैं, उसमें से जो है ये एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। So this is the first ever interdisciplinary subfield of anthropology. Basically anthropology एक स्टडी है कि किस प्रकार से क्रमिक विकास जो है ये होता है। और जब हम हेल्थ के रिलेटेड बात करते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हेल्थ पर एक काफी हद तक जो है ये इफेक्ट रहती है। उसी प्रकार से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, कल्चरल इफेक्ट्स, ये मेडिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है, अप्रोच को अफेक्ट करता है। और इन सब चीजों को एक व्यवस्थित रूप से चर्चा करने का या अभ्यास करने की विधि जो है उसको हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। दिस एरिया ऑफ द वर्क, एरिया ऑफ द स्टडी इसका जो है ह्यूमन हेल्थ रिस्क of environmental changes, consequences of ecological degradation। आज इस पर भी जो है ये काफी हद तक जो है विचार किया जा रहा है। आज रिसेंटली तो नहीं, पर कुछ एक समय पहले, करीब करीब 6-7 महीने पहले एक न्यूज आई थी, चमोली में काफी घरों में जो है ये काफी बड़ी बड़ी तिराड़े पड़ गई थी उत्तराखंड में, और उसके बाद काफी मकान जो है ये ढह गए थे। तो उसकी जो है ये दिस आर द इकोलॉजिकल चेंजेस, और उसकी इफेक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन पर और उसकी इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर जो है ये पड़ती है। उसी प्रकार से जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, आज जंगल कट रहे हैं, उसके कारण हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट हो रही है। तो उसको जो है वो विधिवत रूप से पढ़ना और उसकी इम्पैक्ट को समझना, ये इस विषय का जो है ये एरिया ऑफ स्टडी है। The second area is the pattern of development and globalization impact on health। आज कुछ एक डिजीजेस ऐसे हैं कि जो रैपिडली जो है ये स्प्रेड हो रहे हैं। आज हम ग्लोबल या फिर एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, जहाँ पर जो है ये देश की सीमाएं प्रैक्टिकली जो है ये केवल आइडेंटिफिकेशन तक रह गई है। पर हमें जब कभी भी जरूरत होती है तो वी नीड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फॉर आवर ब्रेड एंड बटर। उसको इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, मेडिकल असिस्टेंस के लिए जो है ये करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में इसकी इफेक्ट जो है अलग अलग होती हुई हम देखते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो कोविड की ही से ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो जनवरी नवंबर दिसंबर 2019 और जनवरी 2019 it was limited only to the area of China, and then after in the month of जनवरी वहां से इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ, और इवैक्यूएशन के बाद हर एक लोग जो है डायरेक्टली नॉट ऑब्जर्विंग द आइसोलेशन या फिर क्वारंटाइन, और सोसाइटी में सीधे जो है ये गए, और देन वी सो द ब्लास्ट ऑफ द कोरोना। तो ये सभी जो है ये डेवलपमेंटल इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट है, और स्टडी को जो है वो थॉरोली करने की जरूरत। इसके जो एरियाज है, दिस आर द बायोलॉजिकल एरियाज। यहाँ पर बायोलॉजी की जितने भी चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उस पर जो है ये एक्सप्लोर करते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस और कल्चरल एरिया,
अगर हम इंडिया की ही बात करें तो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल बिलीव। कुछ एक एरियाज में आज भी जो है ये विचार रखा जाता है कि भाई ईश्वर आएंगे या फिर किसी प्रकार से जो है ये कोई आत्मा का प्रकोप है, या फिर किसी ने नजर डाल दी है। ये कुछ हद तक जो है ये सही हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी की भी जो है ये आज बात है। तो इसकी इम्पैक्ट जब सोसाइटी चेंज हो रही है, मेगा सिटीज की बात करें तो वहां पर जो है ये टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स से जो है ये लेकर के चलते हैं। वहां पर आज बात ये है कि भाई आपको जो भी करना है दैट शुड बी विद द साइंटिफिक एविडेंसेस। और ये भी माना जाता है कि आयुर्वेद इज एन एम्पिरिकल साइंस, आयुष इज ए not a scientific medical system. So this changes of the culture affects the healthcare delivery system. Linguistic anthropology, linguistic differences जो है, and last archaeology and applied and engaged anthropology I would be discussing it. So biological biocultural examination of health and illness across the life course, giving the changing social, cultural, material and environmental condition that affects the biological processes. ये काफी हद तक जो है ये एरिया ऑफ रिसर्च इसका बना हुआ है। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को किस प्रकार से ये एडवर्सली अफेक्ट करती है। आज हम सोशल चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सोशल चेंज जो आज देहातों में और सिटीज में देखने को मिलता है, आज हम जो है ये घड़ी के हिसाब से चलते हैं। देहात में भी आज जो है ये होता ये है कि सन रिदम के साथ, सर्केडियन रिदम के साथ व्यक्ति जो है वो बिहेव करता है। तो वहां पर जो है वो ओवरऑल हेल्थ जो है ये इतनी डिटीरियोरेट नहीं हुई है। पर अर्बनाइजेशन में उसके बाद हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ये बढ़े हैं। कल्चरल की मैं बात ऑलरेडी कर ली है। एनवायरमेंटल कंडीशंस की भी जो है ये बात हमें ये करनी पड़ेगी। आज हम अलग अलग टाइप के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर आज कोई मेगा सिटी में रह रहा है, दिल्ली वगैरह में रह रहा है, आगरा वगैरह में रह रहा है, अहमदाबाद वगैरह में रह रहा है, तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना जो है ये हुआ है और खास करके आउटस्कर्ट्स में है। तो वहां पर शाम को और सुबह स्मोक की जो है ये प्रॉब्लम है और इस दैट अफेक्ट्स दी बॉडी। ये जरूरी है, इसकी इम्पैक्ट भी है, इसकी फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और इसकी जो है ये इम्पैक्ट आपके जो है ये मेडिसिन पर जो है ये पड़ती है, हेल्थ पर पड़ती है। तो ये सभी जो है ये दिस आर द एरिया ऑफ रिसर्च इन द मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। Next is the impact of cultural values and social institutions, socio-economic process, and power of relation information regarding way illness and risk of illness is experienced, represented, and responded to by different groups and ethno-medical system. Now, कोविड की अगर हम बात करें, इसको कोविड से ही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि कोविड का एग्जाम्पल हमें जो है ये रिसेंट है। और इस चीज को हम जो है वो उसके साथ अगर समझते हैं तो काफी हद तक जो है ये अच्छा रहता है। अगर हम फर्स्ट वेव की ही बात करें, इंडिया में जब मार्च से लेकर के जून तक फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, दैट लॉकडाउन वाज नेसेसरी। पर उस समय जो है इम्पैक्ट जो है डिजीज के इम्पैक्ट इतनी नहीं थी। पर इसके साथ साथ अगले साल जब ये रिलीव हुआ तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई अब ये कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रीली घूम सकते हो, कोई केयर करने की जरूरत नहीं है। बात होनी ये चाहिए थी कि आपको केयरफुल रहना है पर पैनिक नहीं करना है। प्रॉब्लम ये दोनों जो है ये शुरू हुई कि पैनिक हुआ और केयरलेस हो गए। तो उसके कारण जो है ये हुआ ये कि पूरा जो है ये विस्फोट इंडिया में 2021 में ये हुआ और हमने जो है ये काफी हद तक जो है ये क्राइसिस देखी। तो ये जो इंफॉर्मेशन ब्लास्ट हुआ था उसके कारण ये थोड़ा प्रॉब्लम जो है ये बढ़ा था। करेक्ट इंफॉर्मेशन इन ए पैलेटेबल वे दैट शुड हैव बीन गिवन इन माय ओपिनियन। तो ये होना ये चाहिए था कि भाई आप जो है ये पैलेटेबल हो, इजीली अंडरस्टैंड हो, पैनिक क्रिएट ना हो। और इस प्रकार से अगर होता, क्योंकि फियर इज द इम्पोर्टेंट वन, द कल्चरल डिफरेंस।
एक भय का वातावरण अगर हो जाता है तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. Healthcare provision and exclusion, disease surveillance, control as mean of understanding the politics, responsibility locally, nationally, and globally. This is about the how to make the proper health policy, and that should be decided on the different parameters, the cultural differences, availability differences, मान्यताओं के आधार पर हमको जो है ये करना पड़ेगा. तो हम दो प्रकार के सच को मानते हैं, एक वैज्ञानिक सच और एक मान्यता का सच. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना जो है ये खास चाहूंगा. किसी को अगर लगा है और कोई भी अगर पेन रिलीवर लेता है तो पेन रिलीवर लेने के बाद उसको जब तक सीरम में उसकी नेसेसरी कंसंट्रेशन नहीं होता है तब तक उसको जो है ये रिलीफ होनी शुरू नहीं होती. पर एक प्रकार की जो प्लेसिबो इफेक्ट है, जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई आपने मेडिसिन ले ली और पेन जो है वो फटाक से गायब हो गया. दिस इज नॉट ड्यू टू द मेडिसिन बट दिस इज ड्यू टू द थॉट. अब वही होता है जब हम एनाल्जिन की जगह पर हम आयुर्वेद की मेडिसिन जैसे कि गोदंती भस्म है या फिर सर्पगंधा है उसको हम यूज करते हैं तो उसको ऑनसेट ऑफ इफेक्ट में जो है ये 15 से 20 मिनट तक का समय लगता है, जो कि जो है ये टाइम किसी भी मॉडर्न एंटी पेन रिलीवर्स में ये होता है. पर मान्यता के कारण ये होता है कि भाई आयुर्वेद दवा जो है वो काम नहीं करती, धीरे धीरे काम करती, तो इसमें मिटने में जो है ये देर लगेगी. तो दिस आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड इन द medical anthropology, and the policies need to be decided and the true information it needs to be given. Now coming on to the Ayurved, मैडम ने कहा था कि दिस द होलिस्टिक साइंस, और आयुर्वेद का और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का हमेशा जो है ये संबंध रहा है. तो जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसका कोई संदर्भ मिलता है या नहीं है, मैं इस विषय का निष्णात नहीं हूं, पर जितना मैंने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझने की कोशिश की है, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को मैंने समझने की कोशिश की है, तो कुछ एक बातें जो आयुर्वेद में बताई गई है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में, उसको मैंने कुछ जो है यहाँ पर संकलन करने का मैंने प्रयत्न किया है. तो पहली चीज इसमें जो है ये आती है, हम लोग प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति परीक्षण रोगी में हम हमेशा जो है ये करते हैं. और प्रकृति परीक्षण में अलग अलग प्रकृतियां हम पढ़ाते हैं बच्चों को, और प्रकृति का परीक्षण भी करते हैं, उसको एसेस करते हैं. तो दोष प्रकृति जो है ये इसकी जो है ये इम्पैक्ट कल्चरल बैकग्राउंड से, एनवायरमेंटल फैक्टर से ये होती है. तो प्रकृति केवल अपरिवर्तनीय है ऐसा नहीं है, पर ये परिवर्तनीय भी है कुछ एक, और कुछ एक अपरिवर्तनीय है. जो प्रत्यात्म नियत प्रकृति है, जो स्टेम सेल बनाता है, जाइगोट बनाता है, उस समय की जो प्रकृति, उस समय की जो जेनेटिक मेकअप है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है. पर उसके अलावा during the gestational period, post gestational period, the culture in which the person is ये डेवलप हो रहा है, जिस एरिया में रहता है उसकी जो है ये इम्पैक्ट होती है. तो उसको हम लोगों ने प्रकृति के साथ किया है. जैसे जाति प्रसक्ता प्रकृति है तो ये जातिगत आधार पर जो है ये थोड़ी रहेगी, किस कम्युनिटी में उसका जो है ये जन्म हुआ है उसके आधार पर उसकी जो है ये प्रकृति में थोड़ा जो है ये चेंज होगा. Then kula prasakta, specific when which family the person belongs, deshanupat in the area where the person belongs. This is the effect of the environmental factors on the anthropology development of the body physics and the medical प्रॉब्लम्स. कालानुपातिनी, काल के अनुसार, वय के अनुसार. तो ये प्रकृति ऐसी है कि जिसमें बिहेवियरल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बॉडी पर ये होता है, और उसके साथ साथ ये चेंजेस हमको जो है ये देखने को मिलते हैं. जबकि प्रत्यात्मनीयता प्रकृति है वो जो है ये अपरिवर्तनीय है. नो सेकंड वन, जब हम ये अलग ढंग से हम पढ़ाते हैं आयुर्वेद में, भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते तथा
इंद्रिय अर्थाः। तो ये बेसिकली जो है ये फोकस था जब ये पढ़ाया था। तो ये होता था कि भाई इंद्रिय जो है ये राजसिक, तामसिक, सात्विक ना हो करके ये पंच महाभौतिक है। जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम इन 3 गुणों की चिकित्सा नहीं कर सकते, पर अगर भौतिक है तो हम इनकी चिकित्सा कर सकते हैं, और इसलिए इंद्रिय को आयुर्वेद में पंच भौतिक माना है। तो ये भी जो है ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई किस प्रकार से जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस हैं, ये एनवायरनमेंट की इफेक्ट बॉडी पर किस प्रकार से और कैसे होती है, इसको जो है यहाँ पर समझने का एक प्रयत्न किया गया है। ये एक और रेफरेंस मुझे मिला है, ये जनपदोद्वंस में से है। जनपदोद्वंस को केवल हम एपिडेमियोलॉजी तक सीमित रखते हैं, तो वो जो है ये हम आयुर्वेद के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। यहाँ पर मास डिस्ट्रक्शन है, मास सिविल सोसाइटी को मास डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसके कारण है। तो एक जो है दृश्यन्ते हि खलु सौम्य नक्षत्र ग्रह सॉरी ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिलानाम दिशा च प्रकृतिर्भूतानां कारिका भावाः। तो ये पूरी जो है दिस आर दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि जिसकी इफेक्ट बॉडी पर, और जो हम सोसाइटी एज अ होल जितने भी भूत तत्व हैं हर एक पर उनकी जो है ये इफेक्ट हमको मिलती है। ये जो हम औषधियाँ उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, पानी वगैरह है, मकान है, उस पर जो है वो ईच लिविंग एंड नॉन लिविंग आर अफेक्टेड बाय दीज फोर्सेस, और उसकी जो है ये इफेक्ट हमको जो है मिलती है बेशजानी यावत अन्न अतः रस वीर्य विपाक प्रभवाणी भवंती। तो इनकी इफेक्ट जो है वो जितने भी बायोलॉजिकल लिविंग क्रिएचर है उस पर जो है ये पड़ती है। भेषज की अगर हम बात करें तो ये जो है ये रस गुण वीर्य विपाक पर इनका जो है ये प्रभाव पड़ता है। सिमिलरली ह्यूमंस पर इसका प्रभाव पड़ता है, प्राणी पर उसका जो है ये प्रभाव पड़ता है। तो दिस इज द एरिया of the understanding, the interdisciplinary understanding of the cosmic and the humans। एक यहाँ पर मैं कर नहीं पाया हूँ, थोड़ा समय का भी जो है ये अभाव था और उसको संकलन में पूरी तरह से नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंटेशन में नहीं रखा है। एक आयुर्वेद में बात होती यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसकी कंपैरिजन ये पूरी मैं खुद नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने जो है इसको जो है ये नहीं रखा है। कल्चरल डिफरेंसेस की हेल्थ पर क्या इफेक्ट होती है, इस पर भी जो है वो आयुर्वेद का विचार है। तो आदिकाल में ये माना जाता था कि व्यक्ति जो है वो 400 साल तक जीवित रह सकता था, और वो जो है ये ईश्वर की तरह उसमें जो है ये सभी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये था। और उसके बाद जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कल्चरल चेंजेस होने लगे, सोसाइटी में चेंजेस होने लगे, कुछ एक लोग में जो है ये संपन्नता आने लगी, तो ये क्रमशः ये चेंजेस होने लगे। केशांचित अत्यादानात सांपन्निकानाम, किसी के पास 5 पैसा ज्यादा आ गया और उसने जो है वो थोड़ा जो है ये ज्यादा खा लिया तो बस आलस्य हो गया, और उसके बाद जो है ये पूरी जो है ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। शरीर गौरवात क्षमा, क्षमात आलस्य, आलस्य आई तो संचय बढ़ना शुरू हुआ, संचय बढ़ा तो परिग्रह बढ़ा, परिग्रह से लोभ हुआ, और लोभ के बाद जो है ये सारी जो है ये प्रॉब्लम शुरू होने लगी। लोभ से अभिद्रोह हुआ, अभिद्रोह से झूठ बोलना हुआ, झूठ बोलने से काम क्रोध वगैरह जो है ये मानसिक भाव और मानस रोग जो है ये उत्पन्न होने शुरू हुए, और इस प्रकार से उम्र का जो है ये ह्रास होने लगा, और कृतयुग ये सॉरी कृतयुग से कलयुग ये घट के 100 साल तक का ही रह गया। तो जब हम ये बात करते हैं तो एक चीज जो है ये वृद्धाहार में आती है, संतान दोषस्य, बॉडी की जो है हम डाइट लेते हैं, बिहेवियर हमारा है, तो उसकी इफेक्ट जो है ये
हमारे जेनेटिक्स पर पड़ती है और ये दैट डिसाइड्स दी और हेल्थ स्टेटस इन द फ्यूचर। और इसकी चिकित्सा अगर ये जनपदोद्वंस है, जैसा मैडम ने कहा था कि हमें जो है ये आयुर्वेद के साथ इसको जो है ये संयुक्त करना है, तो चरक ने इसका जो है ये विधान दिया है, सेवनम ब्रह्मचर्य से तदैव ब्रह्मचारिणा। ब्रह्मचर्य का सेवन जो है ये करना चाहिए। पर ब्रह्मचर्य क्या, इज इट सेलिबसी? नो। व्हेन वी सी चरक, तो यहाँ पर जो है ये ब्रह्मचर्य का जो है ये थोड़ा अलग मीनिंग होता है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों से आध्यात्मिक अर्थ से कहीं अलग है। ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम सौमनस्य प्रभृतयोः ब्रह्म ज्ञान अनुगुणा गृह्यन्ते। तो यहाँ पर जो है क्या काफी व्यापक अर्थ है कि ब्रह्मचर्य से केवल जो है ये हमें सेलिबसी या सेक्सुअल ड्राइव को हम बात नहीं कर रहे हैं, पर सभी इंद्रियों की जो है ये प्राकृतहीन मध्य और अधिक प्रवृत्ति की जगह पर मध्य प्रवृत्ति जो नियत है प्रवृत्ति, उसी प्रकार से ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, उस पर जो है ये बार जो है यहाँ पर ये आयुर्वेद ने दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य यहाँ पर जो है ये पूर्ण करता हूँ। और इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया, और जिस विश्वास के साथ पवन शर्मा जी ने मुझे इस विषय पर कहा कि मुझे आज बोलना है, उसके सैल्यूट लिए मैं सैल्यूट सैल्यूट आपको निशांत जो जी, है सैल्यूट प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए ये सैल्यूट पूरा नया निशांत जी, विषय था। सैल्यूट। थैंक यू वेरी मच सर। Excellently, you have really great. सोच ही थैंक यू वेरी गजब है, मच सर। सोच Thank you गजब very है। much. अग्निहोत्री सर, आज निशांत जी ने बिल्कुल कमाल कर दिया है। यही तो चीज होती है, जो बढ़िया अच्छे सिक्के होते हैं उन्हें कभी भी कहीं जला लीजिए। स्वर्ण की कीमत नहीं कभी कम होती है इसकी है। जय हो, थैंक यू वेरी जय मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। और जय क्या। हो। अगर आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरा हूँ तो उससे कहीं बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड थैंक द यू वेरी लिमिट्स। मच सर। वो कसौटी छोटी पड़ गई। कसौटी छोटी पड़ गई। आपका आभार सर। बस थैंक आपका यू। वरदस्त बना रहे। जय हो, मैं जय जो हो, हमें बिल्कुल। तो बहुत ही खुशी होती है, आप उस परिवार की परंपरा से हैं जिसमें हमारे लिए नहीं, सिर्फ और आप पे सिर्फ बिल्कुल सम्मान ही है। बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद है सिर्फ सर। निशांत सिर्फ जी पे सम्मान ही पूरा सम्मान आशीर्वाद। कर सकते हैं उस परंपरा में, तो केवल सम्मान ही कर सकते हैं। आप तो खाली प्रतिनिधि हैं वहां पर, यहाँ पर। जय हो, जय हो। सच्चाई दीजिए। मैं अब डॉक्टर सैकत वसु को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सैकत वसु, डॉक्टर सैकत जी, वेलकम वेलकम। Yes, sir. Thank you. सॉरी, मैं भी लोगों को ट्रबल देता हूँ, सब लोगों को रजाई नहीं में नहीं से तो उठा के बिठा देता हूँ मैं। सबसे क्षमा no, मांग- no. ऐसा करना चाहिए ना. We have to move forward with take this movement and initiative forward. So thank you very much for the second part of the lecture. Madam has been an iconic anthropologist and has extensively, provided you a very good details about medical anthropology, connecting it to Ayush. So there is not much new to suggest for me on this part. So I'll like to add a little new dimension to a little interesting part that you may like, and an emerging part of medical anthropology, which is forensic anthropology. And क्योंकि I have lived in the West and this forensic anthropology is extensively used, and how this has become a very rare part of our life in various aspects, I'll just highlight shortly on this. So we all know about the forensic science, and in forensic science we use a lot of evidences for the purpose of litigation, for identifying different crimes, or in analyzing various crime scenes and stuff. And the medical anthropology particularly has evolved extensively. Few of the things that we already know in India is, our DNA evidences, which has extensively become very common in identifying parentage, or DNA analysis from semen, blood, other body fluids and tissues, which help us in identifying a particular individual. But if that particular individual is the victim or has been killed or murdered, then from their close relatives, their son, daughter, parents, or brothers, sisters, even half brothers and half sisters, or even from cousins, depending on what condition and situation we are facing,
modern DNA technology is now capable of identifying any individual to a very precise and specific level. This is not only available in the Western countries now. DNA kits are easily available in India, and even the DNA test has been legally accepted in Indian courts and is being extensively used and exploited. It is not only used in case of human forensics, it is also nowadays used in case of wildlife forensics, where body parts of different animals, etc., are identified based on the DNA content from collected from their cells or other tissues, feather, bones, etc. And it has also become a very important part of conservation biology. Even in airports and other points of entry, modern days, DNA technology is also used in identifying biological materials which could not be identified at the spot, or if they are in piece of meats or body fluids and tissues and stuff. So this technology has expanded. But more interestingly, where medical anthropology has become extensively useful and extremely valuable based on anthropological knowledges in Western countries, is the race profiling part. What is race profiling? Say, for example, a long time back, or sometimes a farmer may be working in the field, has stumbled upon a skeleton. He was, say, possibly working on his field, extracting on exploiting particular, removing soils from a particular area, preparing the soil for some kind of agricultural activities, and he accidentally came across a skeleton which may have been dumped without his notice inside his property by some criminal, or someone has murdered an individual and has put there down. So once the police and the forensic investigators come in, they try and salvage all the skeletons, whatever they could salvage from their part. If the bones are in quality conditions, and if they're not too old or fragile, or has not disintegrated, or has not been burnt extensively into ashes beyond retrieve, they can still isolate DNA from the bone cells, and that could be used for the identification of the purpose, which is molecular biology and biochemistry in the sense. But where medical anthropology comes into part is that they have extensively collected data on various races, whether you are South Asian Indians, whether Caucasian, whether you are black, whether you are South Asian, wherever, whichever part of it, Mediterranean, African, North African, Middle East, or from the Pacific Islands, Chinese, whatever or wherever part of the world you are, particularly in American forensics and medical anthropology, they have classified bones, they have classified tissues, they have classified face types, they have classified face features and how muscles are organized, etc., and has put them into outstanding software. So what they have is, we have in India what we call sketch artist. Say, for example, a crime has been conducted and there are some visible evidence. Some people have seen the people conducting the crime, and the police wants to identify them. They request that person, can you provide their description to a sketch artist who can follow your description, and he will draw the face or the portrait of that person on a piece of paper using pencil, or sometimes it is used by using computer softwares and other sophisticated instrumentation, and somehow they regenerate the face of an individual who was involved in the crime based on the evidences, based on the memory of the persons who has seen that person at the site of crime, or has seen that person conducting the crime. And in many cases, whether it is in India or overseas in America, they have been able to identify that particular person from those sketches. This is quite commonly used in India now. But in case of medical anthropology, it is outstanding. What they're doing is, first they have a skeleton. So first, for example, they have the head or the skull of the individual, and based on their morphometric measurements and other anatomical features, they possibly will be able to identify whether it's a male or a female. And based on, once they identify it's a male or a female, it goes to an anthropologist artist who are extensively experts in areas of muscle design. So what they do, they use clay models, or they have different kinds of clay, and they use various kinds of marker mixtures to regenerate the face. So they will put various markers on the face, and these forensic artists, who are anthropologists, physical anthropologists by training, are capable of generating muscle layer after layer after layer, and the final product, when they generate the complete face,
is able to define whether that person is of Caucasoid origin or Negroid origin or Asian origin. And sometimes they will put in all other facial features, etc., from whatever materials they could retrieve. And in many cases, they have found almost 70, 80, even 90% close matching from a simple skull, which is simply outstanding. And they have been able to do based on the extensive data collection and anthropometric measurements they have taken for profiling various races. So whether you are a white Caucasian person, whether you are South Asian, or you are Chinese, or whatever race, or black, or whatever race you are, they sample the males, females, babies of every racial groups and collect data on their hair, nose structure, features, corneas, ear shapes, whatnot, skin depths, their muscles, their skin tones, their eye colors, eyebrows, and every possible anthropometric measurements, shape of the eyebrows, shape of your forehead, shape of your nose, angle of your nose, and whatnot. The detail is so intricate and so extensive, and the forensic anthropologist artists are so extensively trained. They use this minute data form, and they are capable of regenerating an entire face through their artistic skills as well as through their anthropological knowledge, and also by using the measurement of the thickness of the muscles and how they are arranged in identifying and profiling a race. This has been a monumental discovery in medical anthropology. The DNA technology is considered to be one of the cornerstones of medical anthropology, which has now been extensively used around the world for settling various disputes, not only in case of crime, but also in case of doubtful parentage or parentage being challenged, or to identify an individual from a particular family, or even for historic purposes. Say, for example, the Tsar Nicholas II of Russia, the last Tsarist emperor of Russia, and his entire family, his wife and their daughters, all were, and his son Alexei, all were killed by the Soviet army as there was a change of power, and they were close to a northern town. They were buried in a huge forest, and possibly 75 years after this mass murder happened, there has been evidences where they were able to collect those bones from those areas, and then DNA forensic anthropology was applied to identify beyond doubt to the court that those bones and skeletal remains, which was destroyed by fire and even by putting acid 75 years back, were able to identify to the bones of the Grand Dutch and the Grand Duchess, all the princes and the prince, as well as the Nicholas Tsar II and his wife Alexia, was identified and was sanctioned by, categorically identified and sanctioned by global scientists who are experts in medical anthropology in identifying the royal family who were massacred during those changing transition of time in the Soviet era. So this could not only be used for historical purposes for identifying individuals, they can be used in our current times for crimes where a particular victim has been left or has been buried, has been burnt, and it's lacking a name, lacking any kind of identification. But modern medical anthropology has they collected so much extensive data on this, and they are applying this data in generating and providing an individual the name. So one of the officers or one of the experts on the television indicated that it is quite pity that an individual is left lifeless beneath the soil. It is the duty of the medical anthropologist to give them an identity, find their name, find their nationality, locality, ethnicity, to give their family the relief that they have been identified or they have been located even dead, and punishment has to be given, or punishment is delivered, or judgment is delivered to the person who has brought his or her body or life to that end. So these modern technologies have made medical anthropology a star of discoveries and innovations, particularly in case of various complex litigations, serial killer crimes, and other related issues in the Western countries. These technologies are quite expensive at this point of time, but India is also not going behind. And these new methods and techniques will still take some time to take shape in India and make them available, because our country is a hugely anthropogenically diverse country, and very little information on the anthropometric measurements of various tribes, subtribes, primitive tribes, and
even our scheduled caste, scheduled tribes, and our normal upper caste population has been conducted in India, we need to have molecular data, biochemical data, as well as anthropometric data extensively in databases to solve such crimes using medical anthropology down the line in case in India too. So, in short, these, particularly from the perspective of India being a bioculturally a very rich country with so much diversity of race, ethnicities, anthropogenic measurements, anthropometrics, and diversity in language, culture, body shapes, types, skin color, and as well as religion, blood types, everything. These should be extensively used in India for collecting data because it could change the face of crime detection, particularly in case, and help the advancement of forensics in India to a great extent. And I sincerely believe that this will be made available. Researches are being conducted, and these anthropology, medical biology, molecular biology, biochemistry, biochemical analysis, all this will be integrated together to strengthen the score of forensic sciences in India. These technologies are essential and are a necessity on the face of typical complex crimes that are happening in the country and needs to be resolved to give punishment to the individuals who are escaping from the law, and also to give solace to the family members who have lost their loved ones through the help of medical anthropology. Thank you so much. It has been a pleasure once again to deliver on Ayush platform and to work on every new subjects that Pavan Sharma ji provides me an opportunity to talk about. Thank you so much and wish you all a very good night. And we look forward to collaborate and continue our program, putting its foot forward as much as we can to the country. Thank you. Thank you. Grateful to you, Dr. Sekat. सेकत सुपर्णा जी की जोड़ी मतलब ओह ओह, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। एक्सीलेंट। अग्निहोत्री सर, कह दिया। हमें बड़ी गर्व के साथ ये बात कहनी हो रही है कि रियली उनकी अप्रोच सब्जेक्ट पर, उनका प्रेजेंटेशन, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एवरीथिंग, और इतना बड़ा वाइड इनका कवरेज रहता है इंटरनेशनली, जिन शब्दों को हम लोग सामान्यतः शायद प्रोनाउंशिएट भी ना कर पाए, उसमें वो इजी गोइंग सारा प्रेजेंटेशन देते हैं। और अच्छा लगता है कि उनका विषय पर इतना कमांड है और हमको इतना लेट भी डिस्टर्ब करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो इट्स ए ग्रेट प्लेजर फॉर अस दैट। अग्निहोत्री जी, कांग्रेचुलेशंस। आपके पीछे आपके अवार्ड दिख रहा है, तो आपको एडवांस कांग्रेचुलेशंस। आपके पीछे आपका अवार्ड दिख रहा है। ये तो सर आज का ही, अभी जस्ट अभी दोपहर में आज। अच्छा। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस अभी आप देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। लाके यहीं रख दिया था। Thank you once again. So I think our guest speakers have completed their presentation in a very, very confidently and very authoritatively manner. That since being a new subject, it was really opened our thinking direction, that in what way we can just correlate Ayush and had been the previous science of anthropology. In that way, if the approaches are same, and as Dr. Saikatji informed, the newer sector regarding the forensic anthropology, that it becomes much more important in the today's scenario. Also, that forensic medicine or forensic site is so important as far as the criminal cases are concerned, or any sort of shortcomings nowadays very much prevailing. I think in every state of India, especially Punjab, or UP, Bengal, everywhere. So that science was also there in that era. This is very important information, and we can take the some of the references as a background or as a supportive informations regarding the present knowledge available with us, and also that is in practice in the forensic department. I think this is a great information put forward by our guest speakers today, and all the guest speakers have completed their work. I think on our platform, if any our guests are still having any information to put forward, they are most welcome, because all the guest speakers are here and we organizers are here. I think with a hectic day, having
two topics covered by our guest speakers. I think it's the time to say goodbye and really relax there and spare them for the rest of the routine work of today's. That way, it's better that by extending the sense and vote of thanks and real honor to them, also a great satisfaction from the side of our IRES. We again thank them for their contribution, and for rest, Professor Pawan Sharma ji.